Hello students, we are discussing the ultimate analysis or elemental analysis. So after discussing the determination of percentage of carbon, percentage of hydrogen and percentage of sulfur, today we will discuss the determination of percentage of nitrogen. So nitrogen of coal sample is estimated by Gildel's method. Here K is silent. We call it Gildel's method. So for this, first we take a coal sample and we find out its weight by weighing it. So this coal sample is now placed inside a Gildel flask. Gildel's flask is actually a long neck, small round bottom flask. Now inside this Gildel flask, after adding coal sample, we add concentrated H2SO4 and then we add small amount of copper sulfate and potassium sulfate. These two act as a catalyst. Now this Gildel flask is closed with the help of cork at the mouth and it is heated for 2 to 3 hours. So the coal combustion takes place of the coal and nitrogen is eliminated. So this nitrogen now reacts with H2SO4 which is present inside the Gildel flask, and after reacting with H2SO4 it forms ammonium sulfate. So let me again point out that ammonium sulfate is formed and whatever nitrogen is present in ammonium sulfate is coming from the coal. So now we have to trace this amount of nitrogen, that is how much nitrogen was present in the coal sample. For this we set up now another experiment and I am trying to explain you with the help of diagram. Now here we take a round bottom flask. Now the contents of Gildel flask are transferred into this round bottom flask. So inside this round bottom flask we also add methyl orange, that is 2 to 3 drops of methyl orange indicator. Now we close this round bottom flask with the help of cork. This cork has 2 holes. To one hole a dropping funnel is connected, and with the help of this dropping funnel we add 40% of NaOH solution drop by drop inside the round bottom flask. Now to the other hole a rubber tube is connected. This rubber tube has a water trap and it is surrounded by the condenser, and the other end of the rubber tube is dipped inside a H2SO4 solution taken in a conical flask. Now after setting up the experiment, again I repeat, in the round bottom flask we have taken the contents of Gildel flask, which mainly contains H2SO4 and ammonium sulfate. Now to this we have added methyl orange as indicator. Now drop by drop when we add that is sodium hydroxide solution, so therefore NaOH reacts with ammonium sulfate to form sodium sulfate plus ammonia plus water. So because we are heating it, we heat this, and as we heat the vapors of ammonia as well as H2O, that is water vapors, they begin to rise. So in the tube, so there is a water trap. So this water trap does not allow the water vapors to pass further, but it restricts them. Only ammonia, vapors of ammonia H3 are allowed to pass through the condenser. Now this condenser has a setup in which cold water is circulated, and when the hot vapors of ammonia come in contact with this condenser, the ammonia gas gets condensed and it liquefies
and gets collected in a conical flask. This conical flask now contains H2SO4 solution, that is H2SO4 whose volume is known, and we have taken it in excess, that is known excess of standard acid solution. By known excess, we mean, known means we have taken the volume which we know how much volume we have taken. Excess means whatever is the requirement we have taken, apart from that requirement we have taken some quantity in excess, so therefore it is called as excess. Now standard means we know the normality of this acid solution. So again I repeat, we know the normality of this H2SO4 solution in conical flask. We know its volume, and volume we have kept in excess. So now what will happen when these ammonia vapors, they condense, they get collected in H2SO4. So ammonia now again reacts with H2SO4 to form ammonium sulfate. So ammonium sulfate, which was formed in gel flask, was converted to ammonia vapors. Now these ammonia vapors are again converted back to ammonium sulfate. So here we have taken the H2SO4 in excess, volume is in excess. Suppose the requirement is of 30 or 30 around about 30 ml, then we will take access to this, that is 35 or 40 ml. So it reacts with ammonia, reacts with H2SO4 to form ammonium sulfate. Now the excess of acid is diluted and its volume is determined by titrating it against the standard alkali solution. Now what we do here, we have taken the excess of H2SO4 solution. So some amount of H2SO4 will react with ammonia to form ammonium sulfate, and the remaining H2SO4 will be left behind. So we have to calculate how much H2SO4 is left behind. Only then we can calculate how much reacted with ammonia. So once we know this value, how much H2SO4 reacted with ammonia, then we can calculate the volume of ammonia formed and the normality of ammonia. Because one thing, let me tell you, that the acids and bases, they always react in their according to the law of normalcy, that is then their equivalence, they react in their equivalent proportion, that is N1 V1 is equal to N2 V2. So again I repeat here that we have taken H2SO4 in excess. Suppose you have taken 40 ml, and if 30 ml reacts, then 10 ml will be left behind. We are interested to know how much is left behind. Once we come to know that 10 ml is left behind, that means 30 ml has reacted, and 30 ml reacted means this volume will correspond to 30 ml of ammonia. And the normality of given acid, this acid will correspond to the normality of ammonia solution. So in this way we can trace the ammonia form, that is the nitrogen present in ammonia. So what we do, subtracting this volume from the total volume, that is again I repeat, the excess of acid is diluted, its volume is determined by titrating it against the standard alkali solution. Now how do we find out how much H2SO4 is left? We can find out the amount of H2SO4 left unreacted by titrating it with the help of alkali solution. So this is called as back titration. Now subtracting this volume from the total known volume, we get the volume of acid used up against ammonia, and this is calculated for. So from this volume the percentage of nitrogen is calculated as. Now weight of the coal taken is x gram, we know. Now volume of acid used up is V1 centimeter cube. Normality of acid is N1. So this V1 and N1, that is volume of acid used up and the normality of acid, corresponds to the volume of ammonia. So again here I have written acid and base always react in equivalent proportion, that is they react in proportion of their normals.
Therefore, by applying the normality equation, that is N1 V1 is equal to N2 V2, we can say if V1 cubic centimeter of acid having normality N1 corresponds to, that is the V2 cubic centimeter of ammonia. That means volume of ammonia V2 is equal to V1 only, that is volume of acid, and normality of ammonia, that is N2, is equal to the normality of acid, that is N1. That means N1 V1 of acid is equal to N2 V2 of ammonia. Now, from this V2 and N2, we can calculate the amount or percentage of nitrogen. How? We take standard data, and standard we know that if 1000 ml, that is 1 liter of ammonia solution is prepared, whose normality is 1, then it contains 17 gram of ammonia, that means 14 gram of nitrogen. Therefore, if V2 cubic centimeter of ammonia is formed having normality N2, that means it contains 14 upon 1000 into V2 into N2 gram. That is V2 and N2. Now we know. How we know? V2 and N2 is equal to V1 and N1 of the acid, as I have written in the step before. So percentage of nitrogen is equal to 14 upon 1000 into V2 into N2 upon X into 100. What is X? X is the weight of the coal taken. So students, let me again repeat in Hindi. नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करने के लिए कोल सैंपल में हम जेलडेल विधि का उपयोग करते हैं। जेलडेल विधि में हम जेलडेल फ्लास्क लेते हैं। जेलडेल फ्लास्क एक लंबी गर्दन वाला छोटा सा राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। इसके अंदर हमने कोयले का सैंपल जो पहले से ही हमने तोला हुआ है, जिसका हमें भार ज्ञात है, उसको डाल दिया। अब हम इसमें सांद्र H2SO4 डाल देते हैं और कुछ अमाउंट कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट के भी ऐड करते हैं, जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब इस जेलडेल फ्लास्क का मुंह हम एक कॉर्क की हेल्प से बंद कर देते हैं और इसको अब हम हीट करते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। इस दौरान सारा नाइट्रोजन जो है कोल से वो H2SO4 से रिएक्ट कर चुका होता है और अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे वापस बता दूँ कि अमोनियम सल्फेट में जितना भी नाइट्रोजन है वो सारा का सारा कोयले से आया है। तो हमें इस नाइट्रोजन को ज्ञात करना है कि कितना नाइट्रोजन कोल में था, उतना का उतना सारा अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो गया और वो ऐसा का ऐसी हमें यहाँ पे एस्टिमेट करना है। इसमें से कुछ भी कहीं गिरना पड़ना या गायब नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसके लिए एक और सेटअप करते हैं। अब हम लेते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने जो ऊपर जेलडेल फ्लास्क के कंटेंट्स थे, जिसमें कि अमोनियम सल्फेट है बना हुआ और कुछ बचा हुआ H2SO4 भी रह जाता है, ये कहलाते हैं जेलडेल फ्लास्क के बचे हुए कंटेंट्स। इनको हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लेते हैं और इसमें हम 2-3 बूंदे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की भी डाल देते हैं। अब हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को कॉर्क की हेल्प से बंद कर देते हैं। इस कॉर्क में 2 होल हैं, एक में ड्रॉपिंग फनल है और दूसरे में एक रबर ट्यूब है जिसमें कि वाटर ट्रैप लगा हुआ है। तो ड्रॉपिंग फनल की हेल्प में हम 40% NaOH का विलयन लेते हैं और इसको हम बूंद बूंद करके इसके अंदर गिराते हैं। हम NaOH इसलिए डालते हैं क्योंकि जो बचा हुआ H2SO4 है, जिसने रिएक्ट नहीं किया था नाइट्रोजन से, वह न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें इंडिकेटर की हेल्प से कलर चेंज पता चल जाता है। अब हम इसको राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करना शुरू करते हैं। तो इसमें अमोनियम सल्फेट जो बना था वही शेष बचा हुआ है। अमोनियम सल्फेट हीट करने पर विघटित हो जाता है और NaOH से रिएक्ट करता है। अमोनियम सल्फेट नीचे अभिक्रिया दी हुई है। अमोनियम सल्फेट NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाएगा और अमोनिया निकलेगा और साथ ही जल के वाष्प निकलेगी। तो ये दोनों जो हैं, सोडियम सल्फेट तो पेंदे में बैठ जाएगा, सॉल्ट है। अमोनिया और पानी की भाप दोनों ऊपर उठती है, लेकिन रबर ट्यूब में वाटर ट्रैप लगा हुआ है, इस वजह से पानी की जो भाप है वो वहीं रुक जाती है और राउंड बॉटम फ्लास्क में वापस लौट आती है। जो अमोनिया की भाप है वो आगे बढ़ती है और जैसे ही वो कंडेंसर से होके गुजरती है, कंडेंसर इस भाप को ठंडा कर देता है और अमोनिया की जो भाप है
वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर लिक्विफाई होकर और एक कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट होते हैं। इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने H2SO4 लिया हुआ है। ये H2SO4 हम कहते हैं नॉन एक्सेस स्टैंडर्ड HCl एसिड सोल्यूशन, H2SO4 सोल्यूशन। नॉन का अर्थ है कि जिसका वॉल्यूम हमें ज्ञात है। एक्सेस मतलब कि वॉल्यूम उसका अधिक लिया है, जितना उपयोग में आना है उससे कुछ हम ज़्यादा लेते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है कि इसकी नॉर्मेलिटी हमारे को ज्ञात है। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो भी अमोनिया है रिएक्ट करेगा H2SO4 से, अमोनिया यहाँ पे H2SO4 में घुल जाता है और अभिक्रिया करके वापस से अमोनियम सल्फेट बनाता है। तो जो भी अमोनिया H2SO4 से रिएक्ट करेगा वह पूर्णतः रिएक्ट करना चाहिए और उसके बाद जो H2SO4 बचा रह जाएगा तो हम उससे हमने पहले से ही इसकी वॉल्यूम को हमारे को नोन है, ज्ञात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 40 ml H2SO4 लिया है और अगर बचा हुआ शेष हमें किसी तरह से पता चल जाए कि शेष H2SO4 जो रिएक्ट नहीं किया, अभिक्रिया नहीं की, वो 10 ml है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि 40 में से जब 10 शेष बचा है, इसका मतलब 30 ml ने अमोनिया से रिएक्ट किया और 30 ml जो है वही 30 ml अमोनिया की भी मात्रा होगी, क्योंकि ये एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं अपने नॉर्मल्स के प्रोपोर्शन में, इक्विवेलेंट में। मैं फिर से बता दूं कि अधिक मात्रा वॉल्यूम लेने का अर्थ तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर हमको वॉल्यूम ज्ञात है कि हमने H2SO4 का कितना अधिक विलयन लिया है और हमें बचे हुए H2SO4 का मान पता चल जाए कि 40, जैसे हमने लिया 40 था और हम टेस्ट करके पता कर लें कि 10 बचा है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि 30 ml H2SO4 ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया। तो 30 ml H2SO4 का मतलब हुआ 30 ml ही अमोनिया सोल्यूशन, और H2SO4 की जो नॉर्मेलिटी है वही नॉर्मेलिटी अमोनिया की भी मान ली जाएगी। तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो यहाँ पर यही बताया है मैंने कि किस प्रकार हम इसको जो बचा हुआ जो विलयन है H2SO4 का उसको हम टाइट्रेट करते हैं NaOH से, क्योंकि NaOH से टाइट्रेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना H2SO4 अनरिएक्टेड रहा, जिसने रिएक्ट नहीं किया। और जब हमें अनरिएक्टेड H2SO4 का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो हम ये आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर गया। तो जो वॉल्यूम रिएक्ट किया वही का वही वॉल्यूम अमोनिया का भी कहलाएगा और वही नॉर्मेलिटी H2SO4 की अमोनिया की भी कहलाएगी। इस प्रकार हम कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि कोयले के सैंपल का भार हमने शुरुआत में लिया था, मान लीजिए x ग्राम है। जो वॉल्यूम एसिड का जो यूज़ में आया, यानी कि जिसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, वो अगर V1 क्यूबिक सेंटीमीटर है और नॉर्मेलिटी एसिड की N1 है, तो हम हमेशा जानते हैं कि एसिड और बेस हमेशा अपने तुल्यांकी भार के प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं और नॉर्मेलिटी का ये जो नॉर्मलता का इक्वेशन इसको फॉलो करते हैं, यानी कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो यहाँ पर अगर V1 सेंटीमीटर क्यूब एसिड की वॉल्यूम है और उसकी नॉर्मेलिटी N1 है, तो हम कह सकते हैं कि यही वॉल्यूम V1 ही V2 होगा, यानी कि V2 जो वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर, V2 क्यूबिक सेंटीमीटर अमोनिया का जो वॉल्यूम है वो ही उतना ही वॉल्यूम है, उसकी मात्रा या उसकी वैल्यू वही होगी जो कि एसिड के V1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, और वही नॉर्मेलिटी N2 की N1 यानी कि एसिड की नॉर्मेलिटी के बराबर होगी। इसका मतलब अब हमें V2 और N2 का मान ज्ञात हो चुका है। जब V2 N2 का मान ज्ञात हो गया तो हम आराम से नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। कैसे कि हम ये स्टैंडर्ड वैल्यू को जानते हैं। जो पहला एक फॉर्म लिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड है कि 1000 ml अगर अमोनिया सोल्यूशन बनाएं जिसकी कि नॉर्मेलिटी 1 है, 1 है, तो हम जानते हैं कि उसके अंदर 17 ग्राम अमोनिया होगा, यानी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित होगा। तो अगर V2 जिसका हमने मान ज्ञात कर लिया है, V2 क्यूबिक सेंटीमीटर अमोनिया का वॉल्यूम है जिसकी कि नॉर्मेलिटी N2 है, तो कितना नाइट्रोजन होगा? 14/1000 इंटू V2 इंटू N2 ग्राम। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, V2 और N2 की वैल्यू वही होगी जो कि V1 और N1 एसिड की वैल्यू है। V1 अर्थात वह वॉल्यूम एसिड का जो यूज़ में आया। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हुआ 14/1000 इंटू V2 इंटू N2/x इंटू 100। x यहाँ पे कोयले का भार है।